Good evening, ladies and gentlemen. With just 10 days for the first vote to be cast in Uttar Pradesh, Prime Minister Modi has hit the ground running with his first mega virtual rally. He has set the agenda and that it is the war between Badlav and Badla in ground zero Uttar Pradesh. In a direct attack, Prime Minister Modi didn't hold back punches, saying that anti-social elements were trying to bring rioters back to power. This was on a day when Akhilesh displayed his show of strength and officially filed his nomination from his father's bastion, Karhal, in the Mainpuri constituency, Lok Sabha constituency. Trying to turn the tables, the Samajwadi Party chief, who claims himself to be the main challenger in the Uttar Pradesh elections, fighting ring, and said that the BJP can deny that more than 99 candidates from the Saffron Party also have criminal antecedents. Listen in to this war of words. गर्दी करने वाले लोग थे ना, वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। ऐसी अनुकूल सरकार उनको चाहिए कि उनको उनके अपने खेल खेलने में सुविधा हो, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो प्रत्याशी उतारे हैं उनमें 99 प्रत्याशी जो हैं आपराधिक मुकदमे वाले हैं, तो वो संकोच क्यों कर रही है 100 सेंचुरी पार करने के लिए? एक दो और बढ़ा दे, सेंचुरी पार हो जाएंगे। 99 में सीएम और डिप्टी सीएम दिया गया। इन सीएम डिप्टी सीएम पे तो पहले से ही बड़े बड़े मुकदमे थे। मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी सीएम ने खुद मुकदमे वापस लिए। As the battle for Uttar Pradesh was taking new twists and turns, an unprecedented bonhomie was captured in the national capital. Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi was seen with Samajwadi Party patron Mulayam Singh Yadav at the Parliament, helping him come down the stairs of Parliament at the entrance. Not just that, it was Smriti Irani who touched his feet and took his blessings. In fact, Netaji, as he is fondly called, also gave blessings to Smriti Irani. And these pictures now showing the respect being shown by the BJP towards the very veteran patron of the Samajwadi Party. Meanwhile, the Yadav scion will face his father's former lieutenant as his challenger in Karhal, which will be the Karam Bhumi for Akhilesh Yadav. BJP has sprung a surprise with SP Singh Baghel filing his nomination from the Yadav family stronghold. This OBC leader, who also part of the union cabinet, eyes the substantial non-Yadav OBC votes and is somebody who's been a lieutenant of Mulayam Singh Yadav in the past. Times Now is tracking each and every poll update. In fact, Western UP is the pivot around BJP's campaign at least for the last few days, and Times Now is the only channel highlighting the voters' pulse. And that brings me, ladies and gentlemen, to the legitimate question on the NewsHour tonight. Will the UP battle be a cakewalk or a huge contest? Will there be only two horses in this race? That's the question and that's the debate. Karhal contest, that's the hashtag and the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. Joining me tonight, Gaurav Bhatia, National Spokesperson of the BJP. Also joining me is Ghanshyam Tiwari, National Spokesperson of the Samajwadi Party. I have Rekha Choudhary, Spokesperson of the Rashtriya Lok Dal. Shekhar Iyer, Senior Journalist. Saba Naqvi, Senior Journalist, joining me on the debate. But before I go to my panel, I want to introduce the man who's going to take on Akhilesh Yadav from Karhal, SP Singh Baghel. Namaskar Baghel Saab. क्या आपको लगता है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं करहल से और अखिलेश यादव को आप चैलेंज कर पाएंगे? क्योंकि 2017 जब बीजेपी की लहर थी तब भी समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर था 50% के करीब था।
मैं पूछना चाहती हूँ, ये जीतने के लिए लड़ रहे हैं आप कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है आपको? शेरों की बलि मैडम कहीं नहीं दी जाती है, बकरों की बलि दी जाती है। और एसपी सिंह बघेल जो 2009 में अखिलेश यादव से चुनाव लड़ा था, तो ना तब बकरा था, ना जब डिम्पल यादव से लड़ा था तब वो बकरा है, और ना अक्षय यादव से लड़ा तब वो बकरा था। तो शेर है। तो अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे यूपी में 403 सीटों में अपनी पसंदीदा सीट पर जाकर के अपने टिकट पर स्वयं दस्तखत करके चूज की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने करहल की जनता का मनपसंद कैंडिडेट को उतारा है। उन्होंने मनपसंद सीट चुनी है। बघेल साहब, आकांक्षाओं को जो पूरा करे वो चुना है। जी बघेल साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप मुलायम सिंह जी के साथ रह चुके हैं और आज वहीं उन्हीं के गढ़ से, जहां उनके पुत्र लड़ रहे हैं चुनाव करहल से, आप उनके पुत्र के खिलाफ खड़े हुए हैं इस वक्त। कहीं ये जो संबंध हैं, ये जो खराब हुए संबंध, ये उसका बदले की भाव है या नहीं, बदले की भावना से एसपी सिंह बघेल कभी राजनीति नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आज पूरे देश की मीडिया 2:30 बजे के बाद ऐसा मुझे प्रस्तुत कर रही है कि जैसे कल तक मैं समाजवादी पार्टी में था और कल धोखा देकर के मैं आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन गया हूं। तो मैं पूरे देश की जनता को ये बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद मैं 3 सदनों का सदस्य रह चुका हूं। मैं जब सपा मैंने छोड़ी, उसके बाद मैं राज्यसभा में गया और राज्यसभा के बाद मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में टुंडला से जीत के कैबिनेट मंत्री बना और उसके बीच में आगरा लोक सभा लड़ करके अब भारत सरकार में एमओएस हूं। तो ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि मेरे उनसे संबंध थे। 12 साल पहले हम लोगों के संबंध विच्छेद हो गए थे और उसके बाद मैं 3 सदन कर चुका हूं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और भारत सरकार और राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में मैं इधर यूपी में कैबिनेट मंत्री था। तो कृपया देश की जनता को ये जरूर बताया गया है कि मैं समाजवादी पार्टी में 3 बार एमपी लगातार जलेसर से रहा। चौथी बार में मेरी टिकट काटी गई। अखिलेश यादव कन्नौज के साथ फिरोजाबाद आए, उसके बाद अपनी पत्नी डिम्पल को ले आए, उसके बाद अक्षय यादव आ गए। तो अब भीड़ तो नहीं चलाऊंगा, वो प्रत्येक व्यवसाय किसी जमाने में रहा होगा, लेकिन अब तो राजनीति करने के लिए आया हूं। तो ये कोई अवसर बात का नहीं है। लेकिन मैं राज्यसभा 3 साल की छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से अक्षय यादव के खिलाफ लड़ा था। तो ये चौथा चुनाव मेरा सेठी परिवार से हो रहा है। ऐसा ना बताया जाए कि कल तक मैं वहां था और आज मैं कोई यहाँ आ गया हूँ। इस दौरान इन्हीं लोगों ने मेरे पे मुकदमे कायम कराए, जेल भिजवाया, झूठे मुकदमे कायम कराए। तो क्या क्या नहीं किया, वो कोई रोने गाने वाली बात नहीं है। जब दोस्ती तब दुश्मनी होती है, और जब दोस्ती होती तो दोस्ती होती है, दुश्मनी होती तो दुश्मनी होती है। और राजनीति में कभी नफा नुकसान नहीं देखा जाता है। 100% फायदा या 100% तो आप दुश्मनी निभा रहे हैं पार्टी। आप नहीं, दुश्मनी तो कभी करनी नहीं है। डेमोक्रेसी में दुश्मनी का कोई स्थान नहीं है। बघेल साहब, आज एक तरफ बीजेपी में और समाजवादी पार्टी में तलवारें खींची हुई हैं और दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट से कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें स्मृति ईरानी जी पैर छू रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं मुलायम सिंह यादव जी से, और नकवी साहब सहारा दे रहे हैं मुलायम सिंह जी को। तो ये फोटो अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास तस्वीरें नहीं है। ये भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, शिष्टाचार का पालन स्मृति जी ने और मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। मैं अगर कोई तस्वीरें होंगी तो मेरी भी अच्छी बहुत सारी होंगी कि जब व्हील चेयर पर वो पर्सनल स्टाफ नहीं आता तो मैं कई बार शौचालय तक लेके गया हूँ। वो ये तो हमारे यहाँ कल्चर है। हम लोगों क्या कि हम लोग सीनियर का, वृद्ध लोगों का, सीनियर सिटीजन का, हम सबको सम्मान करना चाहिए। एंड लीडर्स आर द रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसा स्मृति जी ने और मुख्तार अब्बास नकवी ने करके एक अच्छी राजनीति का करने का परिचय दिया है। आज आपने अखिलेश यादव को एक तरह से चुनौती दी है वहां से चुनाव के लिए पर्चा भर के। क्या कहना चाहेंगे आप अखिलेश यादव जी को? चुनौती स्वीकार की है, चुनौती स्वीकार की है, चुनौती नहीं देता। मैं आपको बता दूं, ये करहल विधानसभा है, बगल में सेपई है, और जसवंत नगर में विकास हुआ, करहल में विकास नहीं हुआ। वो क्या प्री विधानसभा थी, पड़ोस की विधानसभा थी, दोहरा मापदंड यहाँ के साथ रखा गया है। और यहाँ पर जब भी मुख्यमंत्री अगर जहाँ के नजदीक के होते हैं और अगर वो ठीक नहीं होते हैं तो उसकी सजा सबसे पहले आसपास के पड़ोस पर नजला गिरता है।
तो ऐसे करहल में सैकड़ों लोग मेरे आज ही कह चुके हैं कि हमारे खेतों पे कब्जा कर लिया, हमारे प्लॉटों पे कब्जा कर लिया, हमारे बच्चे की अपहरण हुआ, वो आज तक नहीं लौटी है। यहाँ पर भैंसें उठा ली जाती थी, लड़कियां बाजार में निकलना उनका मुश्किल हुआ करता था, इकरारनामा कराते थे, पैसे ना देने तो उसको बेनामा में कन्वर्ट करा दिया करते थे। इनके समाजवादी पार्टी के लोगों का लट कलेक्टर हुआ होता है, ये पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ पर चलाते हैं। अब हमको मौका मिला है कि कोई एक आदमी ने आकर के आज 2:10 के बाद पूरे मैनपुरी जिले की राजनीतिक परिदृश्य में गर्मी पैदा की है। तो मैं भी कहना चाहूंगा कि जिन अपेक्षा उम्मीद आकांक्षाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लड़ाया है, अपनी जान की बाजी लगा करके भी मैं इस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और छाती अड़ा करके। आप केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, आपको असेंबली के चुनाव के लिए भेजा गया है, आप इससे संतुष्ट हैं? कभी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, पार्टी में संतुष्ट रहना चाहिए। जिस लायक पार्टी जहां पर समझती है, ये क्या कम बात है कि उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता में मुझे इस लायक चुना गया है कि मैं यहाँ पर करहल से चुनाव लड़ूं, तो मैं तो परम संतुष्ट हूँ इस बात से। बघेल जी, और मेरे जीवन का बड़ा अच्छा दिन होगा जिस दिन अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव हारेंगे। भले मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, मैं यहाँ विधायक रहूंगा, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा करके गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का, वंचितों का, लाचारों का, पिटे हुओं का, कोटे हुओं की आवाज बनकर के मैं इस विधानसभा में यहाँ से प्रतिनिधित्व करूंगा। बघेल साहब, आपको उम्मीद है कि आप जीतेंगे या आप मन बना चुके हैं? क्योंकि कोई भी विशेषज्ञ ये नहीं कह रहा कि अखिलेश को हरा पाएंगे, कम से कम करहल की सीट से। मैडम, अखिलेश माने अखिलेश का मतलब होता है कि डिम्पल, डिम्पल का मतलब होता है अखिलेश, अखिलेश का मतलब धर्मेंद्र, धर्मेंद्र का मतलब अखिलेश, अखिलेश का मतलब अक्षय, अक्षय का मतलब। तो थोड़ा सा जरा ये भी है ना, आप पुरानी बातों पर इतनी धूल मत डालो। अभी अभी डिम्पल यादव जी फिरोजाबाद को अपना किला मानते हुए गई और वहां से हार के आई। इसके बाद कन्नौज गई, वहां से हारी हैं, डबल हाथ देख चुकी हैं उस परिवार में। अखिलेश क्या नाम अक्षय यादव फिरोजाबाद गए हैं, हार के आए हैं, मैंने दरार पैदा की, यादव साहब ने हरा दिया। इसके बाद धर्मेंद्र अपनी पसंदीदा सीट पे बदायूं गए, वहां पर हार के आए। तो अभी मैं तो एक सैनिक हूँ, लेकिन सेनापति लोग कौन कौन हारे हैं? श्रीमती डिम्पल यादव को 2 जगह से हारने का मुझे बार बार कहती है अच्छा नहीं लगता है। मैं ना एक पर्सनल ले जाती हूँ कि वो कन्नौज अपनी पसंदीदा सीट से हारी हैं, फिरोजाबाद हारी हैं, अक्षय फिरोजाबाद आ रहे हैं, बदायूं आ रहे हैं। तो घर में से 5 में से 3 लोग हार गए हैं। करहल में कोई चुनाव लड़े नहीं थे, आप पहली बार लड़ रहे हैं, मजा आएगा, देखिएगा। चलिए, कम से कम हौसले बुलंद हैं। नतीजे क्या होंगे ये समय बताएगा, 10 मार्च को पता चलेगा। पर हमारे साथ जुड़ने के लिए भारत की राजनीति में एसपी सिंह बघेल मुझे फोन करें जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बूथ कट्टर से हार गया, लेकिन एक शेर सुन लो कि कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर उतार कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। तो फिरोजाबाद में अखिलेश से लड़े हैं, उनको बाबूजी से समझौता करना पड़ा था जब मैं वहां पर चुनाव लड़ दिया। राज बब्बर की हैसियत कभी नहीं रही है, 5.5 लाख से 2 चुनाव हार रहे हैं। अगर मैं अपना वोट बैंक न खसीदता तो डिम्पल यादव कभी फिरोजाबाद में चुनाव नहीं आती। राज बब्बर 5.5 लाख से लंबी हार का 2014 और 19 में रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो उन्होंने नहीं डिम्पल को हराया था, ये चुनाव मैंने हराया था उनको। बघेल साहब, हौसले मैंने कहा आपके बहुत बुलंद हैं और शुभकामनाएं आपको, क्योंकि इस वक्त आपने मुझे इस लायक समझा कि, और अगर मैं एक लोग कह रहे हैं बलि का बकरा, तो शेरों की बलि नहीं होती है, बकरों की होती होगी। भेड़ बकरी हमारा पुश्तैनी व्यवसाय रहा होगा, लेकिन हम लोग मर्द लोग हैं, छाती अड़ा के इस चुनाव को लड़ेंगे। और ये भी आपको बता दें कि नूरा कुश्ती इसको कहते हैं, बीजेपी सपा से नहीं लड़ रही है। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सेम सीट चुनी है, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे चुना है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि करहल की महान जनता को साथ लेकर, शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को, कुटे हुए को, पिटे हुए को, सताए हुए लोगों को, लाभार्थियों को लेकर के हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। बघेल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। Coming back to my panel, Ghanshyam Tiwari, you've heard it all. Your response. Well, good evening, Navika ji, to you, the viewers, and my fellow co-panelists. I think when somebody has been put in the hot seat, he has to defend his position.
But clearly, SP Singh Baghel has never communicated an interest to contest from that constituency. BJP is desperate, and the goal of Bharatiya Janata Party in this election is only one: not to win people, win headlines. So they are collecting headlines. This is another headline that they collect. Every day, this election is a continuous contest, and we set the agenda of the contest, to which BJP will not respond. They scored a century with 100 candidates who have criminal antecedents as per their own up.bjp.org. They did not respond to that point. They beat up the youth, those who wanted employment. We said we'll give employment to 22 lakh youth in IT sector alone. They did not respond. They have economic survey came out. This is the first time on Times Now we are having a NewsHour Debate, which is not focused on economic survey on the day economic survey has come out. The economic survey says that 1 in 20 children in the country are out of school. Who's responsible? So if a party thinks that they can win the vote by sowing hatred and fear, putting children out of school, not talking about school shut, beating up youth who seek employment, having ministers, Mr. Baghel's colleague is Ajay Mishra Teni, whose uplabdhi is 302 ka mukadma and the conspiracy charge of mowing down the farmers. So if a party thinks that this and the everyday hate speech of Adityanath is going to win Uttar Pradesh election, where the middle class has turned into the poor and the poor class has turned into a story of misery, then they are fooling themselves, not the people. People are well, here. Then I think, you've raised some pertinent points. You've raised some pertinent points. Let me get Mr. Gaurav Bhatia to respond to those. But all I want to say before I hand it over to Gaurav to respond to your charges is that you probably read only a very little part of the economic survey. The economic survey also talks about a lot of achievables that have, agriculture growth that has been the highest ever at 3.9%. It's also talked about 7% increase in consumption at a time when we've gone through 2 waves of COVID. It also talks about 9.2% growth this year and 8 and 8.5% next year. But well, those headlines don't suit you. But Gaurav Bhatia, respond to Ghanshyam Tiwari ji. Gaurav Bhatia has not read the economic survey. He will only respond on what Mr. Baghel said. Okay. Can I make my statement? Yes. I think the same courtesy should be extended to us also. Go ahead. Today, when the Prime Minister spoke, Navika, it was a proud moment for every citizen, especially people residing in Uttar Pradesh. Because the Prime Minister could clearly spell out the development work that has been done. 33 lakh houses to people who didn't have a roof over their head. And the number is shocking. I will just give an example of one district, that is Gautam Budh Nagar. In the 5 years of regime of Samajwadi Party, they could only build 73 houses. And Yogi Adityanath ji has ensured 23,000 houses in last 5 years only in Gautam Budh Nagar. Second, they are talking about criminals being given ticket. Azam Khan, who has grabbed the land of farmers, he has more than 100 cases over him. And he has been given ticket by the Samajwadi Party. That so what if you are in jail? We will protect you. You will come out. You will again grab land of the poor farmers. And I must say how the life of the farmers has changed. Read the Samajwadi Party manifesto of 2012. They promised that they would have a loan waiver for the farmers. Did they waive the loan of the farmers? The answer is a categorical no, and 36,000 crores were spent by Yogi Adityanath ji to waive the loans of the farmers in Uttar Pradesh alone. And last but not least, spewing venom is their USP. Nayed Hassan, who was one of the culprits of a mass exodus that took place in Kerala, has been given ticket. Muharram Ali Pappu, who was one of the accused, who was actually committing atrocities against the Sikh community, has been given ticket. So the answer is, very clear that we are contesting on the plank of development and talking development. And they are contesting with the help of goons, criminals, history cheaters, rapists, and then they come out in the program and they try to question us. And one last point, when they talk about Ajay Mishra Teni, he is not named in the FIR also, but he is to be punished because his son is accused. What about Gayatri Prajapati's wife,
who's been given ticket by Samajwadi Party when Gayatri Prajapati has been convicted for rape? That they will not answer. You know, such is the duplicity and the double standard of Samajwadi Party. I want to ask you, Saba Naqvi. Saba Naqvi, you know, the Samajwadi Party wants us to believe that the BJP is over in Uttar Pradesh. The BJP wants us to believe the Samajwadi Party is over. Of course, Mayawati, nowhere to be seen. Congress, we don't know. There are some headlines, but, you know, not too much of cadre presence over there. So where do you think, you know, the fact is Gorakhpur, where Yogi Adityanath is going to fight from, everybody knows he's going to win it hands down, because since I think 2000, he's never lost this seat, 1999 in fact. And as far as Mainpuri is concerned, it's the bastion of the Yadav family. Mainpuri used to be Mulayam Singh Yadav's constituency, is Mr. Yadav's constituency, and now Akhilesh Yadav fighting from there. Very difficult to believe that in 2017, 50% of the votes went to the Samajwadi Party. It's going to be different in 2022. Where do you think this is headed? Is this really going to be a clash of, you know, just rhetoric on the issue of development, law and order? Or is it really going to be this time the issue of so many criminals in the list of people who have been fielded from both parties? So, Navika, what I honestly think is that the BJP is surprised at the level of the campaign, at the momentum of the opposition. We all know that. So, I would use two phrases. There's a tailwind. Tailwind goes in a certain direction, which SP-led front has got. But now they are confronted with the headwind. A headwind is something that the old BJP, with its equations, with its management, is now confronting, pushing back. So we have a contest, without a doubt. It is not a no contest election. It is very much a contest election. One is even hearing reports of the seat of Ayodhya, that the SP candidate Pawan Pandey, these are from local people. I'm constantly calling up local journalists, besides I haven't travelled there. And so everywhere you're hearing of a contest. Mr. Baghel himself is the MP from Agra, right? Just as, you know, and he is actually not considered a very divisive kind of a figure. He's a popular, relatively popular guy who talks to everybody in Agra. He's a certain kind of an individual. Now he will fight Akhilesh Yadav. Of course, it's a safe seat for Akhilesh Yadav. It will not harm Mr. Baghel. You know, he's a sitting MP from Agra. So till 2014 he's there. He's, I think, the NOS for law also. And you know, so this is how this contest will go. But it is a contest. There is a contest out there, and we will get greater clarity after what happens in the first phase. It's a tailwind and confronted with a headwind. That's how I see it, you know. Come on, honestly, you can't give an explanation on the NewsHour saying tailwind versus headwind and not give us a sense on which is got the greater force, tailwind or the headwind. You have to make that judgment. Right now, no. I have to say, look, atmospheric on the ground, Akhilesh Yadav has created it. And the air front, the noise, the fact that the first phase... Navika, can I quickly respond to it? But, we are talking about a very powerful party structure of the Bharatiya Janata Party. It's not that they just, you know, these kind of win things, they finish off parties like the Congress. For the BJP, we are talking, so they are coming back with strategies. Now let's see what happens. Whether structurally the opposition is strong enough. This is my analysis right now. Well, Shekhar Iyer, who's winning, the tailwind or the headwind? Well, BJP itself creates these wins. You know, the way they fight every election, they make it as if it's a very tough for them. That is the way the BJP goes about it, because they don't want the rank and file to ever rest. Because ever since Modi came, you notice the way the narrative is that the BJP has to win every election and the opposition has to win just one election. Therefore, I am not surprised the way BJP itself has taken this election, as if it's a do-or-die battle. By certain sections. After all, you are seeing the kind of
wherever he goes. So also other BJP leaders in this even door-to-door campaign. But BJP never takes it lightly, because the impression you get that the BJP is facing all kinds of wind is because the way they take the elections. That is because that's how they want the rank and file to do it. Because I remember more than a decade ago, before Modi arrived on the scene, BJP always was in a problem. They used to make a big deal about how much they would do it and the results would be just opposite. But this time, I think, Uttar Pradesh is an important state. Every state is important. Even Uttarakhand is important for BJP. So they will fight it with all their might. And this election is not about how opposition is strong. This election is about what the people's choice are. Are they willing to welcome the return of the SP rule between 2012 and 2017? Unfortunately for SP, the public memory is not so short. Well, Ghanshyam Tiwari, I'm coming to you, Gaurav. Ghanshyam Tiwari, public memory is not so short, says Shekhar Iyer. Well, let me further add to that public memory. BJP believes that unemployment is not an issue. It's an election of parallel track. We are not competing on the agenda. BJP believes unemployment is not an issue. It's only 4%, which is just 1 in 25 youth are unemployed. They believe the average per capita income is doubled, which is a farce, but they believe it. They think that they have also doubled the farmers' income, so farmers are happy and celebrating. They think that Adityanath saying that he is still adjusting West. He celebrates his Rajput caste with pride. He's not graduated to Yogi Adityanath, which you and everybody says. But Mr. Ghanshyam Tiwari, that's exactly what Akhilesh Yadav believed in 2017. Allow me to complete. This is 2022. The Prime Minister does not believe in economic survey. His spokesperson don't read it and we don't discuss it. It's a new India. So let me complete. BJP on the other hand believes that unemployment, poverty is not an issue. It is okay to fool the people that cylinder will be 300 rupees and sell it for 1,000 rupees. It is okay to fool the people that petrol and diesel will be 30 rupees and sell it to 200 rupees. Samajwadi Party responds to every agenda. We said unemployment is an issue. We said 22 lakh youth will be employed through the work that we do. We said poverty is an issue. We said 1 crore families will get pensions. We said poverty is an issue. We said there will be Samajwadi canteens to help people. We said farmers have been cheated by this government, so there will be electricity available for irrigation and free electricity wherever you can manage that money from. But Gaurav Bhatia is responding. I'm running out of time. 1 minute, Gaurav Bhatia. To the capitalists. Okay. So one by one, first of all, I don't know much about the tailwind and the headwind. But I surely know that there is no air in the punctured tires of the Samajwadi Party cycle. And Saba Naqvi ji, I remember the Gujarat Assembly elections. You were talking about the same headwind and the tailwind. We all know what happened. 2017 UP elections, what happened. Lok Sabha election 2019, we know what happened. But I would now come to the Samajwadi Party. The problem with Samajwadi Party is this, Navika. For them, 26 crore doses of vaccine administered to the citizens of Uttar Pradesh is no pollution because for them it is BJP ka tika. And when we say 15 crore people of Uttar Pradesh have been given free ration and food grain, for them it is not an issue because inke time pe to ghas ki roti khate the. When we talk about ganna, when we say 1,50,000 crore has been paid to the cane growing farmers, they will say nahi because Jinnah is more important than Ganna. And women's safety, let me give you the numbers, how crime has come down. First of all, 2,000 crore worth of property has been seized from criminals. Murder rate is down by 25%. Rekha Choudhary of the Rashtriya Lok Dal is also with us. Gaurav Bhatia, I'm running out of time. Allow me to get her in. She hasn't spoken yet. But Rekha Choudhary, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. इस वक्त जो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियां हैं और वो पार्टियां हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी. मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत आशाएं हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को, लेकिन उधर बीजेपी भी अपना कोई ना कोई पैंतरा ऐसे करती है और सबा नकवी जी का भी कहना है कि उनके पास जो मशीनरी है, कार्डर है, पार्टी है जो हमेशा एक जंग के लिए तैयार रहती है. क्या इस माहौल में आपको लगता है कि एक फाइटिंग चांस है
समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के लिए बीजेपी को हराने का? ये हो पाएगा? ये आपका सपना साकार होगा? जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस बार जनता जागरूक हो चुकी है। जनता 5 वर्ष तक बीजेपी सरकार को भुगत चुकी है, प्रताड़ित हो चुकी है। हर मुद्दे पर बीजेपी पार्टी फेल हो चुकी है। जिस विकास के मुद्दे को लेकर इन्होंने सरकार बनाई, उस विकास की ABCD इन्होंने सारी खत्म कर दी। किसी भी मुद्दे पर, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, गन्ना किसान का भुगतान हो, महिला सुरक्षा हो, किसी भी मुद्दे पर ये अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। आपको लगता है महिला सुरक्षा पहले से बदतर है? इन्होंने रोजगार से बहुत ज्यादा बदतर है। आप आंकड़े उठाकर देखिए, आज क्या हो गया है ऐसा कि ये गांव में नहीं जा पा रहे। क्यों ये गांव से खदेड़े जा रहे बीजेपी के नेता? क्यों इनके राष्ट्रीय नेताओं की भी गांवों में एंट्री नहीं है? आखिर क्या ऐसा इन्होंने किया? इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया 5 वर्ष में। ये जनता के पास तक नहीं गए, इन्होंने जनता को इग्नोर किया। सिर्फ यहां पर क्या हुआ, जाति पाति और धर्म के नाम पर इन्होंने सरकार बनाई और इन्होंने सोचा कि जनता मूर्ख है, 5 वर्ष तक सब ऐसे ही धूली रहेगी। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि जनता जनार्दन ही मालिक होती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने एक बात तो हम दोनों ने मान ली और हम सब ने मान ली कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है और पब्लिक क्या करेगी। ये अगर पिछली बार समाजवादी पार्टी को नहीं पता था, BSP को नहीं पता था, कांग्रेस को नहीं पता था, तो पब्लिक ने अपना मत बताया और ये चुनाव जिस दिन रिजल्ट खुले उसी दिन पता चला और तभी एक नई कहानी रची गई। अब इस बार क्या होगा? सब अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, वो जिस तरह से चुनाव के मैदान में उतरे हैं, जिस तरह से अपनी उन्होंने एक बनाई है पर्सनालिटी इस इलेक्शन में, और दूसरी तरफ बीजेपी, जैसा शेखर अय्यर ने कहा। Shekhar Iyer always says this, that BJP is an election machine with a cadre that is so very strong that you can never take them lightly. But then, ladies and gentlemen, the battle has just begun. The Karhal nominations have happened. The first vote will be polled in 10 days from now, and we will be watching every move that everybody makes, because this is an election where the fight has just begun. And it's not over till the last vote is counted.